Hello everyone, welcome to CAX ISOS. I am Sudeep Raj. So I'll be mentoring PSR optional. So ଆମେ ଜାଣିଛୁ PSR optional it's a good weightage as well as marks. କାହିଁକି ଯେତେ ତା ଭିତରେ dynamic concept ବହୁତ ଲେଖିପାରିବ. Apart from the static one, dynamism is the most important phenomenon. କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ IR part and IR is always a news the world, right? ठीक ଅଛି ମୁଁ ବେଶୀ ଡିଟେଲ ଯିବିନି ବଟ୍ ଯେତିକି ଯିବି I'll give you a brief idea why PSIR is needed as well as ଗୋଟେ ଦିଟା questions discuss କରିବି at the end I will discuss the cutoff part bit scientific ହେଇଥିବ empirical data ଥବ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଟିକେ cutoff bit predict କରିବି but I am not a predictor but still I will do so anyways so I have done my masters and I've qualified using it twice trying to pursue PhD PSIR so let me go to the first slide. This is the syllabus, right? Paper 1 गोटे जिनस है कि जितला मैं PSR पढ़ुछु ना maximum जो टाइम था ना तो PSR रे सेक्शन A B तापर सेक्शन A B राइट एटा पेपर 1 रो और पेपर 2 रो ना maximum time is covered at section A 60% of time it is a bit vast ठीक है बेसी था भितर I mean लगे कि हाँ it's bit vast so 60% of time is provided here बाकी 40% section A section B रे cover हो जाए because टिके एटा टिके कोन कि जेतोल पिला ए जो सिलेबस टा देखंती ते टिके घाबरे जानती तो मु भी चाहू तुम फर्स्ट टिके घाबरे जाओ राइट व्हाई इट इज इंपोर्टेंट काहे गलो ए जो सेक्शन टा अछि ना दिस इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर एसे एज वेल एसे रे बहुत दिन परिबो ये तो मैं बहुत सारे थिंकर्स पढ़ ना यू कैन राइट गुड एसेस ये तो थिंकर जानतो ठीक अछि मु टिके थ्योरी मु टिके सिलेबस डिस्कस कर देबी बट तापर टिके गोटे क्वेश्चन देखि केमिति कोन लिखिबार अछि बिकॉज़ it's all of writing art of writing the answers right kete differently तुम answers लिखुछ kete technical PSR because गोटे जिंस हला एटी देखो let me देखो this is the pure polity part right this is a pure polity part this is pure this section paper 1 section B purely polity part right so हमें जानिछु we have an added advantage that the एटा हमरो GS2 रे भी पळे आसे so if you want to score good marks in GS2 as well तो हमें एठो भी किछि पॉइंट्स जो PSR जो किछि पॉइंट्स अछि we can implement those points in GS2 paper also thank you we have to write different answers सेटा कोठो आसीबो PSR रे आसीबो तो हमें देखछु पेपर 1 रो सेक्शन A देखछु which is bit completely different that can help in essay right section B will help in GS2 right यदि मु आरटा को जिबी पेपर 2 right international relations तो आप तो किसी दिक्कत हवा कथा नु if you are a PSR student so it will automatically come right ये जो if you are a PSR student तुमको international relations तो आसु थबो right तो आइदर कोन अछि देखो ए सब जिंस ना when you read all this this is hardly 20% of the time ये तो syllabus पढ़ांदे ना hardly take 20% out section A plus section B paper 2 section B 20% of time is spent here only maximum time 70% of the time is spent in section A टिके बेसी थाए एटा कोन कि लाइक टेल एंडर्स विकेट जल्दी जल्दी आउट हो जाए तो पिला से सेक्शन ए टा देखि डरी जाते राइट तापर तापर आर अलगा सेक्शन कोन अछि सेक्शन बी इंडियन फॉरेन पॉलिसी एटा एटा ला फर्स्ट स्टैटिक पार्ट दिस इज द फर्स्ट स्टैटिक पार्ट हिस्टोरिकल ओरिजिन्स डिटरमिनेंट्स इंस्टीट्यूशन पॉलिसी मेकिंग दिस इज अ बिट स्टैटिक नाम है ना एबे इंडिया एंड द मेजर पावर यूएसए यूए चाइना है ना ए सब जिंसर कोन अछि वी हैव टू राइट द ट्रेड वॉल्यूम्स इन न्यूट काई the countries relation India China हो या India USA हो ना most important thing है trade केते होची 2023 रे केते trade थिला केते increase 2024 that can also affect the relations why Donald Trump is angry over the other countries काहेंगी deficit था ठीक है ना India is a serial tariff abuser हमें बहुत export करू import करू Donald Trump को that is why यदि trade tilted ହେଇଯିବ then it can start affecting the relations तापर आउडा लागे डिफेंस तमे डिफेंस केते एक्सपोर्ट करता that also impact the neighbors तमे जदी
तुम जब आर्मेनिया को जब डिफेंस इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट कर then it can affect the Azerbaijan India relations बुझी पार्छ if if India is arming Israel, yeah, Israel is arming India, then has a negative, India can be seen as a negative one, the Arab point of view. So टिके interrelated था ना, so that's kind of static dynamic part सेटा हमको सही मसाला टा ऐड करेबार अछि जेतरा आंसर टा लिखिबार है ना तापर इंडिया's nuclear policy PNE NPT CTBT you know the Homi Jahangir Baba he is the first I mean scientist nuclear scientist of India who made the bomb है ना I mean he gave the foundation of making the bomb right 76 रे हेतला bomb हेतला but because of him India is well equipped nuclear power 98 रे गोट आउट टेस्ट हेतला प्लूटोनियम रो 1976 से छोटा प्लूटोनियम टेस्ट हेतला because of him आमे कहि परियो कि आम सोवरेनिटी पर एते आंच नाही जेते अलगा कंट्री जिंदे यूक्रेन फसे जातला यूक्रेन तार न्यूक्लियर प्रोग्राम टा सरेंडर कर देतला आफ्टर द fall of the Soviet so everything is related defense हेगला trade हेगला culture relations है this can be studied in paper 1 and paper 2 part ठीक है ओके के जीबी এই যে পার্ট আছে পেপার 2 পেপার 1 সেকশন 8 जोटा আছে এটা টিকে টিকে মানে কোন এটা পিলা হন এটি হস্টিলিটি রহନ୍ତି এই সব জিনিসরে approaches to the study of political theory এটা দেইছি সিলেবাস দেইছি approaches to political theory it has given the historical background মু जीबी ग्रीक वाला सेक्शन जीबी सेतोला पॉलिटिकल स्टेटस केम थिला बुझी पा प्लेटो टाइम रे 348 बीसी कथा कुछ तापरे नॉर्मेटिव अछि and empirical होछि how माने डेटा फैक्ट्स कलेक्शन होछि डेटा फैक्ट्स थ्रू आमे जानि छु पॉलिटिकल सिस्टम केमिति मैच्योर होछि पाछो वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस सेटा नउछु से हिसाब रे बुझी पाछो तापर थियरी ऑफ स्टेट जदे तुम लिबरल देखिबो लिबरल जेंदे जॉन लॉक हेगला तापर हेगला सी कोन लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी स्टेट रो काम होला लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करिया होला किछि नै यदि मैं मार्क्सिस्ट को जीबी सी कहती स्टेट इज द एजेंट ऑफ कैपिटलिस्ट इंस्ट्रूमेंट आई मीन स्टेट इज एक्टिंग एज एन इंस्ट्रूमेंटेशन कौन कहते एक्सप्लॉयटेशन बुझी पाछ कैपिटलिस्ट क्लास रो एजेंट हला के स्टेट मार्क्सिस्ट कहते बुझी पाछ इन द पोस्ट कॉलोनियल हाउ आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस हाउ द countries are shaping their economy their state after post colonial in the India in the shape करू बुझी पारछो सेटा सब कोन एटा कोन छोटा छोटा पार्ट उडा बट हां आ भीतर बहुत सारा लेसन्स अछि पढिबा को अछि सो दैट व्हाइल रीडिंग ऑल दिस थिंग्स हमें ताको कोन गोटे भलो वेल स्ट्रक्चर्ड वेल क्राफ्टेड आंसर दे परिबा हेगला स्टेट सोवरेनिटी मोनेस्टिक थ्योरी आसी माने हॉब्स जीन बॉर्डिन माने हॉब्स आसीबो बुझी पारछो जीन बॉर्डिन आसीबो कोन आंको पे स्टेट सुप्रीम स्टेट सर्वोपरि स्टेट रो सोवरेनिटी से किसी छेड़छाड़ कर परिबो बुझी पारछो स्टेट है तो सब कुछ है नथिंग बिफोर द स्टेट नथिंग आफ्टर द स्टेट जोटा कि मोनेस्टिक थ्योरी कोन बुझी पार तापर प्लूरलिस्टिक थ्योरी अछि तापर ग्लोबलाइजेशन अछि स्टेट एटा कोन दिस द पार्ट है ना ए सब जिंस माने ए सब जिंस देखि डरिया कथा न बट हां टिके माने जेहेतु एटा टिके वेटेज बेसी अछि माने टाइम रे टिके 70% टाइम नहीं जाउछि बट हां वी कैन स्टडी बुझी पारो आफ्टर ऑल वी हैव टू राइट सम आंसर्स दैट कैन इंप्रेस द एग्जामिनर यू आर राइटिंग आंसर्स टू इंप्रेस द एग्जामिनर काहे ता पाखरे ही तमरो फ्यूचर चाबी अछि यस 30-40 शीट्स विल डिसाइड योर फ्यूचर सेटा मूवी में भूली जाओ मूवी रे जहां कोइतले एक पन्ना कभी डिसाइड नहीं करता बट हां वो 30-40 पन्ना ही डिसाइड करता है यू नीड टू राइट गुड आंसर्स एमी जानतो काहे ता पाखरे बहुत सारा कॉपी थाबो जदि तमरा आंसर्स जदि तमे टिके डिवाइड करी के भलो पॉइंट्स देबो देन यू कैन स्कोर दैट 1 to 3 एक्स्ट्रा मार्क्स ठीक बात तुम सी ए जो थ्योरी ऑफ स्टेट जदि लिबरल क्वेश्चन जदि पळे आसिले सी 5 मार्क पाइबो तमे केमि 7 मार्क आनिबो सेटा तम ऊपर डिपेंड करिवो सेटा हम क्लास रे डिपेंड करिवो हम कोन लिखिले 7 मार्क्स पाइ बुझि पारो दिस ह्यूमन राइट्स कोन अछि तापरे पॉलिटिकल कल्चर पॉलिटिकल इकोनॉमी ई सब जिंस अछि तापरे पॉलिटिकल आइडिया लिबरलिज्म सोशलिज्म मार्क्सिज्म फैसिज्म गांधीज्म एटा सब को आइडियोलॉजीज रे पढुछु ठीक अछि वी आर स्टडीइंग आइडियोलॉजीज तापरे पावर एंड हेजेमनी पैरेटो मॉस्को मिचेल्स and now they are asking in this sections also hegemony
लास्ट 2 years रे हेजिमोनी ऊपर क्वेश्चंस आछे राइट इंडियन पॉलिटिकल थॉट रे लास्ट टाइम एमएन रॉय ऊपर क्वेश्चन आसले एमएन रॉय रे क्वेश्चन आसी नथला व्हाट आई रिमेंबर लास्ट 10 years रे एमएन रॉय रे क्वेश्चन बट दे आर आस्किंग काहे कि इवन एमएन रॉय बीन आस्क्ड इन यूपीएससी so OPSC is shifting like they are copy pasting the questions from the UPSC ताको retranslate कर दउछन तो एमएन रॉय वाज आस्क्ड बुझी पारो एंड इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट फिगर बाय द वे जेटा छाड़ी दियंती कहीं पिला पढ़ देबे मनु कोटलिया गांधी एंड अंबेडकर साहब पढ़ी के छाड़ देबे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट दिस प्लेटो अरिस्टोटल मैकियावेली हॉब्स मु जो क्वेश्चन है व्हाट आई विल बी ऑफरिंग दैट मु जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट अछि ना आई विल टेक दिस obviously I cannot take whole syllabus but I'll be focusing on this political thought part क्योंकि आपरे बहुत क्वेश्चंस आसुची 125 मार्क्स रे 125 मार्क्स रे जदि 30 मार्क्स जदि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पर आसुची then you should not miss that so I'll be focusing on Plato Aristotle Machiavelli Hobbes Locke part है ना Rousseau is very important Rousseau popular sovereignty कथा कहले राइट तापरे हेगेल हेगला बुझी पारो स्टुअर्ट मिल हेगला हेगेल हेगला मार्क्स हेगला these are very important personalities we cannot leave them बुझी पारो तो एडा हमर इंडियन पॉलिटी हेगला so one of the best thing of GS2 is Indian polity copy pasted तापरे आईआर रे भी किछि किछि इकोनॉमी पार्ट भी अछि तो मु गोटे हारानी कहि परिबे कि GS1 हिस्ट्री पार्ट भी कवर होउचे केमती हिस्ट्री पार्ट रे कवर होउची फ्रीडम मूवमेंट प्रजामंडल मूवमेंट ओडिशा बुझी पारछो तापरे आउ किछि किछि पार्ट अछि जोटा कि ट्राइबल मूवमेंट्स अछि राइट ट्राइबल मूवमेंट्स अछि हिस्ट्री पार्ट रे जोटा कवर होउची बुझी पारछो तो हिस्ट्री पार्ट भी किछि किछि कवर हे जाउची जेम अंबेडकर गांधी जी पढ़ला हम हिस्ट्री पार्ट को भी टच करू GS1 GS3 जोटा कि हमर पढुछु बुझी इकोनॉमी पार्ट ता हम आ भीतर पढ़ी पारियो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रे केतळ किछि किछि इकोनॉमिक हेगला जो वर्ल्ड ऑर्डर जतला एस्टैब्लिश हेतला थियरी ऑफ लिबरलाइजेशन ते टाइम रे आस्तला WTO हेतला ए जिंस भी हमें आ भीतर पढुछु तो इकोनॉमी पार्ट भी कवर होछि तापरे हम एथिक्स जानछु एथिक्स तो थिंक करो बहुत क्वेश्चन तो मु कहबी इट्स एन अमालगेशन ऑफ ऑल द GS पार्ट्स PSIR PSIR is literally the subject can cover all of your GS sections that is why it is one of the most chosen subject in बुझी पारछो let us analyze the questions जेतले when I will be teaching तो मो पाखरे suppose if you are reading Aristotle ना मैं तक कुंडली पढ़िबा टिके माने suppose Aristotle पढ़ले we will take जेतु एटा ये क्लास टा अछि माने डिस्कशन क्लास will take 1.5 hours 1.5 hours गोटे क्लास रे obviously I won't take 3 hours at least 1.5 hours गोटे ब्रेक नै करी I will teach Aristotle कोन कोन तार इंट्रोडक्शन कोन इन्फ्लुएंसेस कोन तार PYQ कोन कोन अछि तार वर्क कोन मेथोडोलॉजी कोन कंपैरिजन बिटवीन Aristotle and Plato है ना we will go with this theory of justice equality law revelation in the part रे I will hit ताकि आंसर लिखिया हो एत कष्ट होबन जी बट तापर see this is the paper this year paper right 2025 रे पेपर आसला critically analyze Robert Nozick's theory of justice with examples right critically analyze Robert Nozick's theory of justice with examples गोटे जिंस कहबी I don't know how many people have written but this is always related to कोन हमरो theory of justice अछि Rawls theory of justice अछि जेतले हमें Rawls theory of justice पढुछ ना we write the criticism part Rawls theory of justice or criticism part la Robert Nozick and now they are asking directly from the Robert Nozick part बुझी पारछो आमे जानछु Rawls theory of justice कोन थिला ठीक गुडे टाइम रे जो जस्टिस एज फेयरनेस जो बहिटा आनतला 1971 रे है ना 1971 रे 1971 रे प्रॉब्लम कोन होता है सेही टाइम रे कोन अमेरिका रे हिप्पी कल्चर स्टार्ट हो जातला है ना अमेरिका वाज एंगेज्ड इन वियतनाम वॉर
कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर रे सी गोटे धीरे धीरे लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर थी यदि तुम लिबरलिज्म को फॉलो करुछ देन ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर vanished but at the same time when America is despite being a liberal world order America was facing that time many problems बुझिपार से प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने पे रोल्स आनला थियरी ऑफ जस्टिस है ना वेस्टर्न वेस्टर्न जिनस कौन है यूटिलिटेरियनिज्म यूटिलिटी या यूटिलिटेरियनिज्म रो कांसेप्ट थिला माने मैक्सिमम हैप्पीनेस ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर राइट ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस बट ता भीतर कौन मिसिंग थिला कौन रोल थे डिग्निटी पार्ट मिसिंग थिला जोटा कि कांतियन डिग्निटी कौन थी एमानुएल कांत ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू फॉर्मुलेट द राइट ऑफ डिग्निटी ताकू क्लब करिकरी यूटिलिटेरियन प्लस कांतियन डिग्निटी को क्लब करिकरी रॉल्स आर थ्योरी ऑफ जस्टिस दे इफ यू रिमेंबर थ्योरी ऑफ जस्टिस कौन थिला मु कहि परिबे ही वाज प्रमोटिंग लिबर्टी है ना तापरे इक्वालिटी हां आ गोटे जिंस थिला जितले थ्योरी ऑफ जस्टिस देथिला से गोटे वेल ऑफ इग्नोरेंस भी देथिला राइट वेल ऑफ इग्नोरेंस भी देथिला राइट थैंक यू तापरे लिबर्टी देथिला इक्वालिटी वाला पार्ट देथिला तापरे डिफरेंस प्रिंसिपल देथिला डिफरेंस प्रिंसिपल राइट मु एक्सप्लेन करूनी बट आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस इज द परफेक्ट लेक्सिकल ऑर्डर जे कि देथिला रॉल्स थ्योरी देथिला राइट आकु क्रिटिसाइज के करथिला रॉबर्ट नोजिक क्रिटिसाइज करथिला जेतला में रॉबर्ट नोजिक कथा पढछु रॉबर्ट नोजिक को भी जण क्रिटिसाइज करथि के डॉर्किन यदि पढथबो क्लैमशेल हाइपोथेसिस पढता डॉर्किन जो होता कहीं गोटे जिनस रॉबर्ट नोजिक never supported this equality concept let me show you the right whatever this क्वेश्चन कौन कौन आई विल डिस्कस लेटर बट इन द क्वेश्चन देखि थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन बाय हिस्ट्री ऑफ मार्क्सिज्म तापर कौटिल्य आपरा क्वेश्चन आसी जायछला प्लेटो स्कीम फॉर एजुकेशन फॉर द आइडियल स्टेट विथ इट्स कंटेम्पररी रिलेवेंट्स एमएन रॉय देखो एमएन रॉय वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड ए क्वेश्चन एमएन रॉय पचार देतला एंड हां आई हैव टॉट एमएन रॉय व्हेनेवर आई हैव टेकन क्लासेस मु एमएन रॉय को केबे भी छाडिनी तापर अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट विथ इट्स मेथोडोलॉजी से देतला ना अरिस्टोटल बहुत सारे एम्पिरिकल he has read 158 constitutions how it is still relevant in this right 158 constitution read karthila manoj if I start solving this answer anyways problem who down but I would like to mention this Nozick part Nozick with the problem kon thila right Nozick was giving एंटाइटलमेंट पार्ट एंटाइटलमेंट है ना तार थिला एंटाइटलमेंट थ्योरी थिला बट नोजिक रो थिला एंड हमर ये रो रोल्स रो कोन थिला फेयरनेस थिला जस्टिस एज फेयरनेस थिला राइट दिस इज द मोस्ट वन ऑफ द इंपोर्टेंट पार्ट एंटाइटल वर्सेस फेयरनेस कहीं gave entitlement theory of justice according to whom Rawls theory compresses liberty for the sake of equality कौन Rawls कौन करे से आगे कौन देतला लिबर्टी दोतला लेक्सिकल ऑर्डर इक्वालिटी दोतला मु पढ़े नहीं बस आई एम जस्ट गिविंग एन ट्राइंग टू गिव अ स्मॉल एक्सप्लेनेशन लिबर्टी तापर डिफरेंस प्रिंसिपल लिबर्टी माने कोन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ वोट एनीथिंग माने देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड पुअर एक्चुअल माने कोन लिबर्टी मतलब कोन तम माने चॉइसेस को इंक्रीज करो आउ तमरा रेस्ट्रिक्शंस को कमाओ डिक्रीज ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एंड इंक्रीज ऑफ चॉइसेस ताकू लिबर्टी कोन एंड रोल करला कि सब I mean doesn't matter who is rich and poor everybody should be entitled to liberty तापर equality है ना rich or poor they should be given good same गोटे rich son अछि गोटे poor son अछि same education दबार अछि we need to give them same education same class government should make such policies जेमिति हमर welfare policies equality Rawls गोटे पूरा गोटे आइडिया देथिला जोथरे कि इट बी फिट कहीं प्लेटो जो थ्योरी ऑफ जस्टिस देथिला अरिस्टोटल जो थ्योरी ऑफ जस्टिस सेटा से टाइम रे थिला कंटेम्पररी टाइम रे रॉल्स कहले मु थ्योरी देबी सो दैट एवरीबॉडी कैन बी अकोमोडेट तापर डिफरेंट प्रिंसिपल मु कहबी एटी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन रे एग्जांपल नै परिया यू आर टैक्सिंग द रिच सपोज 10 लाख हला गोटे रिच मैन 10 लाख हला सैलरी
तुम ताइते 30% टैक्स माने सपोज देखो तुम 30% टैक्स नेलो गोटे लोकर 3 लाख सैलरी अछि तुम कौन कल ये 10% कल यू कैन नॉट मेक 10% हियर आल्सो इन 10 लाख बुझी पारछो 10% जदि तुम 3 लाख वाला सैलरी तुम टैक्स करछो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कोन 30% सेठी हम डिफरेंस प्रिंसिपल कोन वी आर कलेक्टिंग टैक्सेस बुझी पारछो तो एटा गोटे सुनिछो माने मार्क ट्वेन रे गोटे गोटे भलो वर्ड थला कोन थला ए फाइन इज अ टैक्स फॉर डूइंग रॉन्ग बुझी पारछो एंड a tax is a fine for doing right yeah something like that I forgot actually fine okay उल्टा कहि दिली anyways लिखार किसी नहीं बट हाँ मैं कहली लिबर्टन थ्योरी बुझी पारछो तो ताको हाइक माने कोन लाइक हाइक आल्सो बिलीव दैट सो माने माने लिबर्टन थ्योरी रे नॉजिक कहतला कि दिस सोशल जस्टिस प्रोग्राम्स आर लीडिंग टू करप्शन तेरे भी तो हुए ना सोशल जस्टिस प्रोग्राम रे कोटी गबला है जाए कोटी पीडीएस रे स्कैम मैसेज दिस थिंग वेर नरेटेड बाय द नॉजिक नॉजिक जितले एंटाइम थ्योरी देतले ई सर पॉइंट्स गुडा देतले बुझी पारछो कोन राइट टू प्रॉपर्टी काहे की नॉजिक कहतला कि लाइक लॉक he revived the concept of night watchman state रो काम होला नाइट वॉचमैन तारो किछि काम नै इट्स अ नाइट वॉचमैन स्टेट तो ता स्टेट रो काम होला कि लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करिया स्टेट रो काम अब वेलफेयर किछि नै बुझी पारछो रोल ऑफ द स्टेट को स्टेट डज नॉट हैव एनी रोल इन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जोटा कि रॉस थ्योरी को है its role has to be limited only to the extent it has to properties acquired by the right means so चोरी चका करिवार नै if a property is acquired by the hard work and it is inherited or transferred in the right manner then सेती खाली स्टेट देखिबो स्टेट काम होला या लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी थिंग्स स्टेट करे किंतु फ्रॉड्स रा अलगा चलवा था राइट बुझी पारछो तो ए सब जिंस था राइट तबरे आउट थला कि अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट विथ इट्स मेथोडोलॉजी राइट आमे जानिछु गोटे जिंस अछि जेतो आमे ए सब जिंस पढुछु ना जेतो हमर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट गोटे मिनिट लेट मी टेक थ्रू दैट स्लाइड सिलेबस को देखो एटी देखो हम जो ए जो स्लाइड टा देखुछु वेस्टर्न पॉलिटिकल एट कोन अरिस्टोटल अछि प्लेटो अछि अरिस्टोटल ता पूर्व सॉक्रेट भी अछि दिस विल बी क्लब्ड जेतलो पढाबो दिस विल बी क्लब्ड बुझी पातो प्लेटो कोन कहतला आइडियल स्टेट कथा कहतला अरिस्टोटल कोन कहतला बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट राइट बेस्ट प्रैक्टिकेबल ही रेड 158 कॉन्स्टिट्यूशन बुझी पातो तपर हमें मैकियावेली को जिबा है ना मैकियावेली किए जो रिलीजन को चर्च को स्टेट से सेपरेट करे कहतला राइट मु एटी जिबी मैकियावेली एंड हॉब्स को जिबी हॉब्स बुझी पातो मैकियावेली एंड मैकियावेली कहतला कि रिलीजन को मु स्टेट संग सेपरेट करबी बुझी पातो हॉब्स एंड हां एटी फर्स्ट टाइम आइडिया ऑफ स्टेट आस्तला मैकियावेली टाइम रे आइडिया ऑफ स्टेट हॉब्स टाइम रे जो पॉपुलर सॉवरेनिटी रे कांसेप्ट देछि सी इट इज थियरी ऑफ स्टेट देछि if it is what it is what is state then why state exists Hobbes even Jean Bodin बुझी पाछे popularity popular sovereignty concept sovereignty cannot be कोन compromised आज का डेट रे भी स्टेट रो टा इंपोर्टेंट पार्ट ला sovereignty if it is not sovereign then it's a compromise right I mean Machiavelli is kind of Machiavelli is very important I mean see this na I mean he says that the king should be as powerful as lion and as cunning as fox a king should be amoral not immoral immoral तो हबार नहीं amoral हबा कथा काहे what's the difference between amoral and immoral amoral रोटा कथा कहूँ if a lion is hunting down a deer ठीक कोई फिर that is amoral काहे lion रो existence हला to eat the deer herbivorous animals ठीक बात जदी यदि मु जाइकरी काली गोटे लाइन को शूट आउट कर देबी एंड आई विल सेल दैट स्किन द इंटरनेशनल मार्केट दैट इज इमोरल किंग शुड बी अमोरल काहे कि स्टेट पाही
तो स्टेट रो सॉवरेनिटी पाई तुमको जहाँ करियर अछि एनीथिंग यू शुड डू ओनली फॉर द स्टेट नॉट फॉर पर्सनल इंटरेस्ट दैट इज व्हाई किंग शुड बी एमोरल किंतु हमें जानिछु प्लेटो जो थिला ना ही गिव द कांसेप्ट ऑफ फिलोसोफर किंग प्लेटो गिव द कांसेप्ट ऑफ फिलोसोफर किंग बुझिपारछ से आउरो जिंस भी कहिथिले गोटे फिलोसोफर किंग ना will never like to govern the state काहेकि he is always I mean crowned with that books knowledge ताको सबल knowledge दरकार मु स्टेट को काहेकि काउंट करे I am the least interested person he is the best कोन किंग हे परिबो बुझिपारछ प्लेटो सेम कॉन्सेप्ट देते बुझिपारछ तापर अरिस्टोटल भी आस्तला बुझिपारछ अरिस्टोटल माने तार तीनटा स्टेट देतला अरिस्टोटल टाइम रे तापर कोन मोनार्की देतला राइट मोनार्की देतला तापर हाँ तापर आ गोटे थला पॉलिटी देतला राइट you see this I have forgotten I think I have covered everything हाँ so see he gave the concept of monarchy gave the concept of polity thank you polity रे गोटे कहतला कि हमर जो ये के अरिस्टोटल सेठी concept of democracy भी आस्तला the rule of few I mean rule of many बुझी पारछ polity many as well as the middle class पारछ and these things are relevant in today's society जेतल भी बजट होय ना मिडिल क्लास तो सेमिति भी पळे आसे बजट और सेमिति मिडिल क्लास पळे आसे बुझी पारछ तो से जिंस तार मोनार्की रो परवर्टेड फॉर्म भी अछि टायरानी एंड पॉलिटी रो परवर्टेड फॉर्म अछि से कोथला के डेमोक्रेसी तो किछि किछि जिंस अछि जोटा कि हमर अरिस्टोटल रे दैट इज बीन क्रिटिसाइज्ड टुडे आल्सो राइट डेमोक्रेसी रे रूल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पळे आसे पारछ तार जो पॉलिटी अछि रूल ऑफ मिडिल क्लास पळे आसीबो बुझि पारछ rich may be conspiring against the poor at the same time poor may be conspiring against the rich so middle solution called middle class बुझि पारछ yeah anyways so hey gala amro so this was thing I was just wanted to tell you आ मजर की अरिस्टोक्रेसी है अरिस्टोक्रेसी रूल ऑफ रिच या रूल ऑफ फ्यू भी कोई परिया मोनार्की अरिस्टोक्रेटिक पॉलिटी मैप तो एटा कोन छोट छोट कांसेप्ट अछि जोटा कि हमें पढिबा व्हेन वी स्टार्ट बट हां but I would like to tell you that western political thought ro 5 to 6 thinkers मु ताको भलसे पढिबी एंड तार नोट्स भी देबी because as the times limited but I just want you to know that Machiavelli हेगला Hobbes हेगला Locke हेगला Rousseau हेगला we will study in detail जहाँ भी टाइम अच्छी I will try to complete this one right anyways so see this एटा देखो तो क्वेश्चन जो देखते हैं तो ओसीएस रो प्री कट ऑफ केते आस परिबो है ना लास्ट आई एम जस्ट प्रेडिक्टिंग मु जाननी कि प्रोडक्ट कोन ठीक है परिबो तो जितले बिजनेस एनालिस्ट जोड़ा थांती ना दे यूज लीनियर रिग्रेशन मेथड है कंपनी बड़ा कॉर्पोरेट था ना कॉर्पोरेट आर ऑलवेज ड्रिवन फॉर प्रॉफिट्स प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स केते हबो केते टका खर्च कले केते टका प्रॉफिट आसीबो ए सेही जिंसोडा कैलकुलेट करो तापे गोटे लीनियर रिग्रेशन मेथड संदी जेते को सादा भाषा रे स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड को तो आई हैव यूज सच मेथड इन ए माइन्यूट स्केल काई कॉर्पोरेट कोन हो कि बहुत सारे जिंसो यूज बहुत सारे फैक्टर्स अछि आई हैव टेकन ओनली वन फैक्टर इज दैट हाउ मेनी people are writing for the mails suppose mo UR category ro mail nei है ना UR category ro mail जदि नहीं गले राइट 2022 रे 683 पोस्ट थिला ताको इनटू 12 कर दियो अराउंड केते आछो सम अराउंड 9000 पाखो के आछो राइट ताको डिवाइडेड बाय 2 कर दो UR आसी जिवो UR आसी जिवो
ताको into 0.67 कर दियो कहीं 33% are reserved for the female. So 2745 you are male candidate appeared है shortlisted for the mains के 2745 candidates. How was the cutoff? 48.854. You are male 2023 रे appeared कितने 1613 cutoff कितने 76.085. You are male in 2025 कितना 810 cutoff I mean easy question दिला cicil level question दिला तो cutoff was high 102.0.1. जो हमें जो linear regression method जो यूज करते हैं this is only one factor. I am not counting other factors like माने एथरो जाको अटेम्प्ट मिलनी माइंड यू जहाँ को अटेम्प्ट मिलना माने गवर्नमेंट एथरो अटेम्प्ट देना थी they were the most serious candidates जो एथरो एग्जाम देना थी पाचो तो एबे बहुत पिला को चांस अछि काहे सेमान जदी आसा ना they were the real competitors तापर जहार लास्ट चांस अछि सेमाने भी देना और अब इधर बहुत सारा फर्स्ट टाइमर अछंती जैसे कि लाला ला करी आसंती राइट ता भितरे आ गोटे जिनस हला कि सीसैट फैक्टर इट सीसैट फैक्टर किसी ऐड हेन सेटा सीसैट रे बहुत पिला फेल हेछ या एट द बॉर्डर लाइन वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि होला आई हैव टेकन ओनली दिस वो जो लीनियर रिग्रेशन मेथड यूज करथली ठीक अछि even though only one factor use करेगी the cutoff is around 68.56 only one factor मु जदी बाकी सब factor जदी मु ऐड करबी ना it will pull down to 60 तार अलगा अपर रेंज लोअर रेंज अछि ऑब्वियसली अपर रेंज केबे जीवन 75 केबे जीवन ना 71 भी एते भी जीवन फोरकास्ट एक्चुअली फोरकास्ट एतिक आछि ठीक अछि फोरकास्ट एतिक आछि बट हां तार एतला हम जतला एटा तो ए जो लोअर अछि अपर अछि ना एडा एतला स्टैटिस्टिकल माने माने साइंटिस्ट ओडा कैलकुलेट करियो किछि किछि फार्मूला अछि जब तुम डबल क्लिक करिवो ना फार्मूला पाइ जिवो तो इट ऑप्शन नाइ सेड आई कांट शो यू दैट राइट एटा तार सब माने कोन इंग्रेडिएंट्स इंटरसेप्ट कोन अछि स्लोप अछि कोन आर स्क्वायर अछि एटा सब आउटर यू तो कट ऑफ आस्टी लोअर रेंज रे 68.5x जदि बाकी सब फैक्टर्स जदि ऐड करबी इट विल ड्रास्टिकली कम डाउन टू 60 तो यू आर मेल मते जा लागुची अराउंड 55 to 60 is a very good competitive score. I don't know it can increase also ठीक अछि तो जहाँ अछि you start reading आउ बेसी वेट करनी हां गिव प्राइमेसी टू द ऑप्शनल्स हम जान जो जीएस रे केमते मार्किंग हो ऑप्शनल्स कैन सेव यू ये तो जदि भी मार्किंग कम आछे ऑप्शनल्स कैन सेव यू तुम भाबलो इफ यू आर स्कोरिंग ऑप्शनल 275 प्लस गॉट दैट्स एनफ 275 बाकी सब ऑब्वियसली जीएस रे भी भलो एवरेज स्कोर आसे पड़े ठीक अछि तो दिस इज माने एटा सब कोन ए सब फार्मूला कोन मैं कॉर्पोरेट रेंज हुए प्रॉफिट सेल्स के तब एडवर्टाइजमेंट केते खर्च होबा था सेटा मु जस्ट आ भीतर एक्सट्रापोलेट कर दै छी ठीक अछि एनीवेज तो आई विल टेक ए लीव कल टेस्ट अच्छी do attend the test I will check the copies obviously my major is political science and do come give the test discussion करियो because discussion deliberation discussion रे बहुत सारा inference आसी जाए सारा points आसी so it will help us all so anyways I'm signing out so if you want to join then do join see course अच्छी 5000 भितरे if you take this will be if you take 3500 it will be without discussion right if you take 5000 वाला course आ भितरे मु thinkers part भी add करछि है ना एटा with discussion plus thinkers part आ भितरे around more than 15 classes रहइबो ठीक अछि it will be mostly on the weekdays हमर टेस्ट डिस्कशन सब प्लस हमें किछि थिंकर पार्ट भी एक्स्ट्रा पढिबो जोडा कि तमर एसे रे काम आसीबो एनीवेज so if you want to do join then the number is here you can enquire here come so kali test it's open for all to give हमें देखिए किम कोन आंसर राइटिंग होचे है ना everybody is same right now so I'm signing out I will meet the class